Wiens Displacement Law. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले प्रीवॉस्ट आए रेडिएशन में। प्रीवॉस्ट ने कहा कि जो ये होता है कि हर बॉडी रेडिएशन रिलीज करती है। फिर आए स्टीफन। स्टीफन ने बताया कितना रेडिएशन रिलीज करती है। फाइन, उस थ्योरी पे बिल्ड किया। अब विंस आए और विंस ने बताया कि ठीक है, रेडिएशन निकला, इतना एनर्जी निकला, एवरीथिंग इज फाइन, बट ये रेडिएशन है तो इसका कुछ वेवलेंथ भी होगा। तो ही टॉक्ड अबाउट वेवलेंथ्स। फाइन, so Wiens displacement law says that when a body emits radiation, it does so in various wavelength। ठीक है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो सपोज एक बॉडी है लाइक 50 डिग्री सेल्सियस पे, and if it is losing heat through radiation, so wavelengths are coming out of it, wave are coming out of it, and the wavelength of such wave is not a single wavelength, but it is a continuous spectrum, that there are like millions of wavelengths between a given value। correct। ठीक है। However, there is one wavelength at which energy emitted is maximum, बट इनमें से एक ऐसा वेवलेंथ होगा जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रहा होगा, जिसके थ्रू दिस वेवलेंथ, let's call this as lambda m, it is not the maximum wavelength, it is the wavelength at which energy emitted is maximum। ठीक है, this wavelength is inversely proportional to temperature of the body। So what it means, Ashish, let me explain this। देखिए, suppose there is a body, इससे रेडिएशन बाहर निकला, let's say 100 joule of radiation is released in a second। So this radiation will be in multiple wavelengths, let's say lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, so there's a continuous spectrum, but let's assume that there are only 4 waves for the time being। Right। So if lambda 1 emits 10 joule second, lambda 2 emits 40 joule second, lambda 3 emits 30 joule second, and this emits 20 joule second। If you will add up, this will be 100 joules। So this fourth wavelength are coming out। Okay। Lambda, yes, lambda 2 is called as lambda। Okay, समझ में आया विंस लॉ? So इसका ग्राफ जो होता है, the graph is something like this। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी का इंटेंसिटी, फाइन, वेवलेंथ, इसका ग्राफ is something like this। This is lambda m। At this, the energy emitted is maximum।
Got it? Yes. So this lambda m is inversely proportional to absolute temperature. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ inversely proportional to temperature of body, absolute. So lambda m is inversely proportional to T. So lambda m into T is equal to B. This B is called as Wiens constant. And the value of this B for black body is 0.288 centimeter. यहाँ पे अच्छे से लग देता हूँ. B is equal to 0.288 centimeter Kelvin. Very careful. Centimeter Kelvin है unit. Okay. तो लैम्डा m यदि मीटर में आप लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसे अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा. मैं ये दे रहा हूँ